learn better. Now the third concept here is, okay, British policy. Read this: British policy towards socio-religious reforms in India. This is the third concept, and this is a very important area for prelims question. Towards socio-religious reforms in India, we need to discuss about this policy, British policy, okay, towards this socio-religious reforms in India. So the British policy towards socio-religious reforms in India was non-uniform in nature. It was non-uniform in nature, and I hope all of you know the meaning of this. Non-uniform in nature means what? Policy remained constant or it changed with time. It kept on changing. Now, how it changed? When you will practice PYQs of UPSC, you will get so many questions from this part. Okay, so the policy was non-uniform. It means it kept on changing. It kept on changing. And how it changed, in order to understand, we can divide three phases here. We can make three divisions here. If you want to learn about these changes, so we can make three divisions. The first division is from 1757 to 1813. This is the first division. The second division is from 1813 to 1858. That is the second division. And the third division is from 1858 to 1947. So these are the three divisions. And this is what the first phase is: initial phase of establishment of British rule in India. This phase is the initial phase of establishment of British rule in India. ये initial phase है. This is the initial phase of establishment of British rule in India. ठीक है? अच्छा बताओ, what British has learned from the Portuguese? Should they interfere in the social cultural practices of Indians? No. Humble beginning. It means in initial phase, which policy they will follow? Policy of non-interference. Obviously, अभी तो पैर जमाना है ना, तो इंटरफेयर करेंगे तो इंडियंस नाराज हो जाएंगे. So which policy they will follow? Read this: policy of non-interference in socio-religious or socio-cultural affairs of the Indians. So there they will follow policy of non-interference in the socio-religious or cultural affairs of Indians. Policy of non-interference. We all know why they are following this policy. Because if they will interfere, there is a greater probability that the Indians will become dissatisfied. They will not consider it good. Okay, they may interfere. Okay, so this is the point here. Okay, कि अगर आप अगर ऐसा करते हो तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी. Right, this is the point here. Now do you understand this entire concept, what is happening here? Okay, this is the policy right now. Now what we see here is that in the second phase what will happen? So देखो, in the second phase what happens is that how many years have passed? 1757 to 1813. कितना टाइम हो गया है? How many years have passed? Okay, exactly. So we see here that almost century तो नहीं है, but yes, it is 60 to 70 years have passed. Now EIC is ruling India. So the educated intellectuals, educated Indian intellectuals will mount pressure on the government that you are the administrator. अगर आप लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बना सकते हो तो सोशियो रिलीजियस एविल्स को रोकने के लिए भी तो कोई पॉलिसी बना सकते हो. इज इट क्लियर और नॉट? अगर आप पैसा वसूलने के लिए पॉलिसी बना सकते हो तो इंडिया में जो सोशियो रिलीजियस एविल्स हैं इनको रोकने के लिए लेजिस्लेशन कौन बनाएगा? वो भी आपको बनाना पड़ेगा. So here what happens? Due to the pressure mounted by Indian socio-religious reformers, British will introduce some legislation. वो legislation लेके आते हैं. They are not making efforts to bring changes in the society. Instead, their role is what? Bringing legislations only. केवल legislation ला रहे हैं. And are they doing this willingly? क्या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं. इसका मतलब intention नहीं है reforms लाने का,
बट मजबूरी में रिफॉर्म्स लाना पड़ा। ठीक है, कई बार कुछ चीजें क्या होती है, ठीक है, मजबूरी में, जैसे अपने पावर को आपको मेंटेन रखना है, बनाए रखना है। एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई यू आर क्लेमिंग दैट आप सिविलाइजिंग मिशन पे निकले हैं, तो कुछ लेजिस्लेशन लेके आओ। ठीक है, इट मीन्स कई बार हमारा इंटेंशन नहीं होता है, इंटेंशन कुछ और होता है और हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सुबह सुबह मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने एक शेर फॉरवर्ड किया, तो शुरू में तो मुझे लगा कि बड़ा ही गंभीर शेर है कुछ, तो पहली 2 लाइन मैंने पढ़ी तो लिखा था कि इस शौक में कि दीदार हो जाए उनका, तो मैंने कहा बड़ा मज़ेदार है, आगे भी पढ़ते हैं उसका क्या लिखा आगे। तो उसमें लिखा था इस शौक में कि दीदार उनका हो जाए खिड़की से गली के बच्चे लड़ा दिए मैंने। ठीक है, मेरी बात समझ गया, तो इंटेंशन कुछ और था, बच्चों को लड़ा दिया उसने आपस में। यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, मजा आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जोक। ठीक है, चलिए, तो 1813 टू 1858 क्या होता है कि ब्रिटिश विल फॉलो पॉलिसी ऑफ कॉशियस इंटरवेंशन। आई एम नॉट राइटिंग पॉलिसी ऑफ फुल इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ कॉशियस इंटरवेंशन, राइट दिस, पॉलिसी ऑफ कॉशियस इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ cautious intervention, policy of cautious intervention. It means, write this, intervention in the form of bringing legislations, intervention in the form of bringing legislations, intervention in the form of bringing legislations, कानून ला के इंटरफेयर करना, राइट दिस, इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशंस ला के इंटरफेयर करना, right? And write one more point that, okay, willingly or unwillingly, what will be the accurate word here, unwillingly. So write this, it was done unwillingly, it was done unwillingly, it was done unwillingly. Okay, it means it was done only as a result of pressure mounted by Indian socio-religious reformers. Okay, that is the meaning of unwillingly. So you can write here that it was done, okay, only as a result of pressure mounted by Indian socio-religious reformers. It was done only as a result of pressure mounted by Indian socio-religious reformers. केवल इसीलिए किया गया, right? तो बड़ा contribution किसका है? Who played the main role behind these socio-religious reform movements? British or Indian? Indian played the most important. जैसे आई एम राइटिंग टू एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ यू नो दिस वेरी वेल। राइट एग्जाम्पल नंबर 1, 1829। 1829 में क्या हुआ था, एनी वन ऑफ यू? कस्टम ऑफ सती एबॉलिशन एक्ट 1829, राइट दिस 1829। यहाँ क्या है, कस्टम ऑफ, राइट दिस, कस्टम ऑफ, प्रैक्टिस ऑफ, कस्टम ऑफ सती एबॉलिशन एक्ट 1829 में ब्रिटिश, okay, introduced this act, practice of abolition of custom of sati in the year 1829. और एक और एग्जाम्पल है in the same phase, that is very famous example, that's why I am writing 1856 widow remarriage promotion act 1856. 1856 we see what, widow remarriage promotion act. So 1829 is practice of custom of sati Abolition Act, and 1856 is what, okay, widow remarriage promotion act. कितना आसान है, और ये कब है, in the second phase. थर्ड फेज में क्या होगा, देखो, here we see a very important revolt, that is what, यहाँ क्या हो जाता है, revolt, this is what, revolt of 1857. So after this British will do what, British will bring changes in their policy so that such kind of revolts could be prevented in future. भविष्य में ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। Okay, so here we write this revolt of 1857, and after this British will bring changes in their policy. British will bring changes in their policy. तो देखो देखो क्या था, in revolt of 1857 what happened, okay, some orthodox Indians who were not happy with British because British had introduced legislations to stop this practice of custom of sati.
right, to promote this widow remarriage promotion. So some Orthodox Indians were not happy with this. So they will do what? They will support revolt. They will support revolt of 1857. Now after 1857, British will follow a policy to appease all dissatisfied groups. So now they will do what? Is bar they will decide that we will again follow the previous policy. And what was the previous policy? Policy of नॉन इंटरवेंशन. अगर इंटरवीन करने से इंडियंस नाराज हो जा रहा है, और यहां भी इंटरवीन कैसे किया गया था? कॉशियस मैनर, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है. देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ओनली. So they will again come back to the previous policy. So in this phase, write this, okay, write this, as a part of their appeasement policy, as a part of their appeasement policy, British again, as a part of their appeasement policy, British again come back to their previous policy. As a part of their appeasement policy, British again came back to their previous policy. और प्रीवियस पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस in socio-religious matters, plus giving support to orthodox elements of the society. They will also do this. Policy of non-interference in socio-religious affairs. Policy of non-interference in the socio-religious affairs, plus giving support to the orthodox elements of society. Giving support to the orthodox elements of society. They will follow this policy. अब बताओ, you are claiming that you are on a civilizing mission, और आपका मिशन भूल गया 1857 की रिवोल्ट की वजह से. You again came back to your previous policy. तो what was your priority? आपकी priority क्या थी? इंडियंस को सिविलाइज करना? क्या ये priority थी? No, it was not the British priority. Their priority was to maximize their profit and to maintain their permanent presence in India. ये उनकी priority थी. इंडियंस को बेहतर बनाए, ये उनकी priority नहीं थी. This was only claim, false claims to validate the colonial presence in India. This is what we need to understand. ठीक है? Got it? So in prelims this question is asked that British policy towards socio-religious reforms in India was uniform or non-uniform. So the answer is non-uniform. There are three phases. Initial phase, they follow the policy of non-intervention. In the second phase, 1813 to 1858 or 57, they will follow the policy of cautious intervention, where they will bring some reforms, okay, in the form of legislations. Example is custom of Sati Abolition Act 1829 and Widow Remarriage Promotion Act 1856. Clear? Now the third point is what? After revolt of 1857, they will bring changes in their policy. Now they again followed the previous policy. That was the policy of non-intervention. Plus they will add one more thing. In order to appease the Orthodox Indians, they will do what? Okay, they will try to, right, promote this Orthodox Indians group. अच्छा, Orthodox Indians में तो हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, दोनों है ना? तो क्या ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को प्रमोट करेंगे? यस, 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी तो उसी का एग्जाम्पल है. गॉट इट? Okay, so they will follow this policy. Now one more interesting thing I will discuss here with you about this first page. Clear? About this first page. So again make a subheading, that is first page. First page mein there is another most important point that I am going to discuss with you. 1757 to 1813. 1830. So here British are following policy of non-intervention. Policy of non-intervention. Strict non-intervention. आप ये भी लिख सकते हो. Policy of strict non-intervention in socio-religious affairs of Indians. Policy of strict non-intervention in the socio-religious affairs of the Indians. They are following this policy. Policy of non-intervention in the socio-religious affairs of Indians. Why? In order to appease the Indians. In order to prevent the spread of any kind of dissatisfaction in the minds of Indians against the company, because company has learned from the Portuguese. So they will do what?
they will follow a policy here, and that is, okay, promotion of Orientalism. This they will also do. Promotion of Orientalism. Promotion of Orientalism. This they will also. Orientalism means what here? Indian languages. Study of, read this. Orientalism simply means what? Indian languages. Promotion of Indian languages, right? Promoting the study of India's ancient past, clear? Hindu past, Muslim past, both. Promoting the study of India's ancient past, Hindu past, Muslim past, both. Rediscovery of early traditions of India or past traditions of India. Rediscovery of early traditions or past traditions of India. Rediscovery of early traditions और पास्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे मेंटालिटी समझनी है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की. ये सिर्फ कंटेंट नहीं है. यू विल ट्राई टू लर्न द ट्रिक विच ब्रिटिश यूज टू मेंटेन देयर प्रेजेंस इन इंडिया. दिस इज द इनिशियल फेज. नाउ 1757 कंपनी हैज बिकम द रूलर. यहाँ क्या हो चुकी है? नाउ कंपनी इज द रूलिंग कंपनी. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट dissatisfaction in the minds of Indian people will grow against this ruling company. कंपनी रूल करने लगेगी तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी इतना तो समझ जाएगा ना, भाई इनका काम ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, रूल करना नहीं है. बट दे विल ट्राई टू अपीज यू. एंड हाउ दे आर अपीजिंग? दे हैव लर्न फ्रॉम द पोर्टुगीज दैट दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंडियाज कल्चरल पास्ट. दे विल नॉट इंटरफेयर इन दे विल नॉट इंटरफेयर इन द सोशियो-रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियंस. यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे. सोसाइटी में सबसे ज्यादा डोमिनेंट एलिमेंट क्या है? रिलीजन. सोशल कस्टम्स आर सपोर्टेड बाय रिलीजन एंड ब्रिटिश विल नॉट इंटरफेयर इन द योर रिलीजन. आप बताओ, व्हेन दे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया, कब अलाउ किया? 1813. इसके पहले अलाउ नहीं किया था. ध्यान रखना इस बात को. इट मीन्स कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया. दिस आई हैव डिस्कस्ड हियर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड फेज. पहले फेज में अलाउ नहीं किया, क्योंकि पहले फेज में अगर क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाते तो फिर हमें पता चल जाता कि अच्छा हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ ये बर्दाश्त नहीं होगा. हम तभी भगा दिए होते ईस्ट इंडिया कंपनी. रिलीजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट विषय था. मेरी बात समझ गया ना? तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, यहाँ लिख लेना, एक ऐड कर लेना पॉइंट, दैट क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू कम टू इंडिया इन सेकेंड फेज ओनली. ठीक है, नॉट इन फर्स्ट फेज. क्रिश्चियन मिशनरीज were allowed to come to India in second phase, not in first phase. Second phase में allow किया, not in first phase. तो first phase में वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे कि इंडियंस नाराज हो जाए कंपनी से. प्लस they will, for example, if British want to rule India, so it's better to know about the Indians. आपको जिस पे शासन करना है उसके बारे में जानना पड़ेगा कि नहीं. Got it? मेरी बात समझ गया ना? If you want to rule someone, you will have to know about that person. आपको उस आदमी के बारे में जानना होगा. And this is what British are doing. They are promoting what? Okay, Indian languages, promotion of study of India's ancient past. देखो क्या होगा. Indian languages की स्टडी को प्रमोट करेंगे, इंडिया के कल्चरल पास्ट को जानेंगे, तो इससे वो इंडियंस के बारे में जानेंगे. और जब वो इंडियंस के बारे में जानेंगे तो इंडियंस पे रूल करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. प्लस इससे आपके दिमाग में जो डाउट है ईस्ट इंडिया कंपनी एक थ्रेट है आपके लिए, वो डाउट भी आपके दिमाग से मिट जाएगा. गॉट इट? नाउ डू यू रिमेंबर द पर्सन वॉरेन हेस्टिंग्स? ही वाज सेंट टू इंडिया टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. ठीक है, उसका भी एक रेफरेंस हम लेते हैं. रेड दिस, वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स कब आता है? 1772, ओके, टू 1785. This is the phase of Warren Hastings. I am giving you some facts so that you could relate the things. Warren Hastings come to India, and his purpose is what? To bring administrative reforms in India. He was sent for this purpose.
Clear? To bring reforms in India, right? And what he did, right? He followed the policy of Orientalism. Warren Hastings followed the policy of Orientalism. He followed the policy of Orientalism. And how can we say that he followed the policy of Orientalism? So there are some examples which suggest these facts. For example, okay, there was a close associate of Warren Hastings. The name of that person was N. Halhed. Nathaniel Halhed. N. Halhed was the name of person. He was a close associate of Warren Hastings. He was a close associate of Warren Hastings. Warren Hastings के साथ हमेशा पार्टी बैठ के करता था. He was a close associate of Warren Hastings. And he was given task. And what is the task? That he will compile a set of Hindu customary laws and religious beliefs, and that will be translated into English. Task इसको क्या मिला? Read this. He was given task, right? He was given task of compilation of, these facts can be important for you for prelims. Task of compilation of Hindu customary and religious beliefs, compilation of Hindu customary laws and religious beliefs. He was given this task of compilation of Hindu customary laws and religious beliefs and to translate it into English. To translate it into English. उसको किस में ट्रांसलेट करना था? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था. दिस इज द टास्क ऑफ ओरिएंटलिज्म. मेरी बात समझ गया ना? इंडिया में एंशिएंट टाइम से कौन कौन से कस्टमरी लॉज हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनको कंपाइल करना एंड देन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. दिस इज द टास्क ऑफ ओरिएंटलिज्म. नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स also helped, right? Example number 2. Warren Hastings also helped in the formation of Asiatic Society. Warren Hastings also helped in the formation of Asiatic Society. Asiatic Society का formation का year क्या है? This is also important. 1784. और Warren Hastings का time period क्या है in India? It is 1772 to 85. कितना आसान है. So he also helped or supported in the establishment of Asiatic Society. बहुत important question है. Asiatic Society was founded by whom? Sir William Jones. Sir हटा दो, William Jones. हालांकि सर लिख सकते हैं, अच्छा काम कर रहा है. Sir William Jones. Asiatic Society was founded by Sir William Jones. And in this task he was helped and supported by Warren Hastings. और Asiatic Society का task क्या है? नाम ही है Asiatic Society. It means rediscovery of early traditions or past traditions of India in particular and Asia as a whole. Clear? India और Asia दोनों के context में. So the task was, write this. The task was to rediscover the ancient past or early traditions of, to rediscover the ancient past or early traditions of, to rediscover the ancient past or early traditions of India in particular and Asia as a whole. Okay, this is the most important thing. Now 1781, write the third example. 1781. Okay, Calcutta Madarsa was set up. Calcutta Madarsa was set up 1781. What was the purpose? Yes, Sir William Jones. Okay, Jones, generally it is written. Clear? Calcutta Madarsa 1781, right? The purpose was to promote and to rediscover and promote the study of Persian and Arab languages. The purpose was to rediscover and promote the study of Persian, okay,
पर्शियन एंड अरब लैंग्वेजेस, ये पर्पस था. ऑल दीज आर द टास्क ऑफ ओरिएंटलिज्म. एक और है बट इट इज आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स. देयर इज अनदर एग्जांपल दैट इज, अब वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद है, राइट. 1791, दिस फैक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. 1791, राइट. संस्कृत कॉलेज वाज सेट अप, संस्कृत कॉलेज वाज सेट अप एट बनारस. संस्कृत कॉलेज वाज सेट अप एट बनारस. है ये फर्स्ट फेज में ही. देखो 1791 कब है, बिटवीन दिस पीरियड ना, 1757 टू 1813, इसी के बीच में है. ओके, 1791. तो संस्कृत कॉलेज वाज सेट अप इन बनारस. ओके, एंड राइट. पर्पस क्या है? टू प्रमोट हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, टू प्रमोट हिंदू लॉ, हिंदू लैंग्वेज, फिलोसफी, संस्कृत लैंग्वेज एक्सेट्रा. फिलोसफी, संस्कृत लैंग्वेज एक्सेट्रा. यही संस्कृत कॉलेज 1958 में इट विल बिकम यूनिवर्सिटी एंड इन 1974 टुडे इट इज संपूर्णानंद, ओके, संस्कृत विश्वविद्यालय. ये वही संस्कृत कॉलेज है 1791 वाला. तो इन द फर्स्ट फेज व्हाट द ब्रिटिश आर डूइंग, पहले फेज में ब्रिटिश क्या कर रहे हैं बताओ. इन द फर्स्ट फेज दे आर फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड एट द सेम टाइम दे आर डूइंग व्हाट, they are also promoting policy of orientalism where they are promoting oriental studies, okay, Sanskrit, Arab, Persian, okay, rediscovery of early past traditions of India. So will you consider company as a threat? No. But once their presence is powerful, prominent, so in second phase 1813 they will do what, they will allow Christian missionaries to come to India. एंड द पर्पज इज डिफाइंड. वाई क्रिश्चियन मिशनरीज आर कमिंग टू इंडिया, हमें फिर डाइवर्ट करने की साजिश है. टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रमोट एजुकेशन. बट एक्चुअली व्हाट दे वर डूइंग, दे वर प्रोमोटिंग कन्वर्सन, दे वर प्रोमोटिंग क्रिश्चियनिटी. तो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चन. when you will practice PYQ you can get many important questions from this part. Now today we have discussed the meaning of socio-religious reforms, the meaning of reformist movement, the meaning of revivalist movement. We have discussed about three kind of reformers. Got it? We have also discussed about why it was the need to bring socio-religious reforms in 19th century. We have compared the global context with the Indian context. Acha, when we compare global context with the Indian context, if the same kind of things we are promoting in India that happened during the age of Renaissance, that happened during the age of Enlightenment in Europe, so is it proper to say these developments as the Indian Renaissance also? Yes, कह सकते हैं. 19th century, 20th century socio-religious reforms in India can be said what, Indian Renaissance also, because here also we will discuss about the promotion of progressive ideas, right, liberal political thoughts and all this, that I will discuss in the class. Okay, British policy in the three phases, it was non-uniform. So now we are familiar with the basic part. From next class we will discuss what were the evils, issues of socio-religious evils, how they were addressed, what were the efforts of Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Vidyasagar. We will also discuss about important organizations. Clear? We will discuss about which were the core centers or the nuclear centers of these socio-religious reform movements in India. Okay, and till now you will do what, you will practice all the PYQs from the previous chapters. क्लास के साथ कंप्लीट करना, ये नहीं सोचना है कि क्लास खत्म हो जाएगी फिर मैं क्लास के कंटेंट को रिवाइज करूंगा फिर उसके बाद PYQ प्रैक्टिस करूंगा. वो दिन कभी नहीं आता है. मेरी बात समझ गया ना? क्लास के साथ फिनिश करो. यू हैव टू अपीयर इन 2025 और 2026 डज नॉट मैटर. ठीक है, फिनिश कर लो पूरे के पूरे मॉड्यूल्स को. ठीक है ना, बेसिक पोर्शन को क्लास के साथ सारे PYQ फिनिश करिए. और इससे क्या होगा कि व्हेन आई विल डिस्कस PYQ विथ यू, तो दैट विल बी द रिवीजन. वहां आप ज्यादा ग्रैस्प कर पाओगे. जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज वन साइडेड हो जाएगा, आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा. तो बेटा यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस एंड इफ देयर आर डाउट्स उसको हाईलाइट कर लो रेड पेन से. एंड व्हेन आई विल डिस्कस क्वेश्चंस विथ यू, ओके, यू विल आस्क दोस डाउट्स. ओके, कोई क्वेश्चन? Have you any question, any doubt? Yes, please ask.
Actually, the British judges did what? Okay, they used to appoint Indian assistants. ठीक है, उनके पास स्क्राइब होते थे, असिस्टेंट्स होते थे, और जब जुडिशियल सिस्टम ये डेवलप हुआ, राइट, so the laws which were introduced in India, okay, so in those laws the ancient and medieval laws and traditions were also incorporated, उनको भी incorporate किया गया. For example, UPSC asked questions about Daya Bhag, UPSC asked questions on Mitakshara, that were what? Ancient laws of succession को डिफाइन करने वाले एंशियंट लॉस थे. ठीक है, तो हमारा जो लीगल कोड है वो दायभाग सिस्टम को फॉलो करता है कि मिताक्षरा सिस्टम को फॉलो करता है. जब हम इस डिबेट को डिस्कस करते हैं, इसका मतलब है कि हमने पुराने एलिमेंट्स पे चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है. ठीक है, मॉडर्न लॉज से भी लिया, एंशियंट कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ्स वहाँ से भी लिए, तो वी इनकॉर्पोरेटेड लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है ना, ये हुआ है. गॉट इट? वेलकम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. हाँ आकाश, प्लीज आस्क. यू विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग. देखो मैंने क्या कहा, यूपीएससी के क्वेश्चन का नेचर ऐसा है. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई विल टीच इंडियन सोसाइटी, so it's not only Indian society. I told you that I will teach Indian society and justice both. दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते. जैसे अभी मैंने बताया इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट, अगर मैं इसके 2 चैप्टर बनाऊं तो कैसे होगा? नहीं पॉसिबल है ना. सोशियो रिलीजियस पॉलिसी में 2 चैप्टर्स बनाए, कैसे होगा? So the module is like this: Indian society and social justice. Whenever we will discuss one issue in society, we will discuss the problems, challenges, the solutions, programs and policies all. तो वो एक बार में खत्म हो जाएगा. Plus you will use history, your understanding of history in relating the things. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जो लोग दूसरे ऑप्शनल्स के भी होंगे, जैसे PSIR आप पढ़ रहे हो, तो क्या वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट PSIR में यूज नहीं होता है? होता है ना. ठीक है, तो हिस्ट्री इज नॉट द फादर ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स, नॉट द ग्रेट ग्रैंडफादर, बट इट इज द ग्रेट ग्रैंडफादर. सबका परदादा है. सारे सब्जेक्ट्स, इसलिए कहा कि आपको पहली क्लास में बोला था, इफ यू हैव गुड कमांड ऑन हिस्ट्री, दिस विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस टू राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन. किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, लेकिन वो पीपीटी वाली हिस्ट्री से नहीं लिख पाओगे, ध्यान रखना. तो मैं डिलिबरेटली नहीं यूज करता हूं पीपीटी को, एंड पीपल थिंकिंग दैट आई एम आउटडेटेड टीचर. ठीक है, तो द पीपल हैव देयर सेल्फ फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो खुद का अपना एक सेल्फ फॉर्मुलेटेड स्टैंडर्ड है, तो कुछ कर नहीं सकते. बट देखो, टॉपिक का एसेंस समझना जरूरी है. मेरी बात समझ गया ना? अच्छा, जैसे ही आप टॉपिक के एसेंस को समझोगे, थोड़े बहुत फैक्ट्स तो आप खुद ही अपडेट करके याद कर जाओगे, और फैक्ट्स को याद करना इजी होगा, आसान होगा. यू कैन अपडेट द फैक्ट्स, बट until unless you are not familiar with the essence or the core features of the topic, the same topic will always remain difficult for you. You will always feel the need to revise the module again and again. मैं कह रहा हूं, जब एक ही बार में समझ में आ जा रहा है, तो why to revise again and again? पूरा मॉड्यूल रिवाइज करने की क्या जरूरत है? PYQs रिवाइज करो, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स रिवाइज करो जो भूल सकते हो. कि बार बार आप पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, इट्स नॉट ओके वाइज थिंग टू डू. क्योंकि इतना सारा मॉड्यूल है, इतना सारा जीएस पोर्शन है, करंट अफेयर्स का इतना बर्डन है, आप कैसे कैरी कर पाओगे? मेरी बात समझ गए ना? अगर मैं एज ए हिस्ट्री टीचर आपको बहुत सारी बुकलेट्स दे दूं, बहुत सारे प्रिंटेड शीट्स दे दूं, ये आपका काम है, आप पढ़ लो, तो फिर तो ऐसे बहुत सारा काम आपका है, फिर मेरा काम क्या है? व्हाट इज माई रोल?